Welcome back. The screening of children for the second phase of clinical trials of Bharat Biotech's Covaxin is happening at the All India Institute of Medical Sciences in Delhi today. The clinical trials will be conducted to see if the vaccine is safe and effective for children between the age group of 2 years and 18 years. The clinical trials hold immense significance as many are worried about the possible impact of a feared third wave on children. Currently, India has no vaccine which has been approved for those below the age group of 18. A total of 525 children are being included in this part of the trials, which has been divided into 3 groups. Group 1 has children between the age group of 12 years and 18 years. Group 2 has children between the age group of 6 and 12 years. And Group 3 has children between the age group of 2 years and 6 years. The volunteers will receive 2 doses of Covaxin at an interval of 28 days. This comes after AIIMS Patna started trials recently on children between the age group of 12 years and 18 years. रिक्रूटमेंट होता रहेगा। जब एक सैंपल साइज अचीव हो जाता है तो उसके बाद रिक्रूटमेंट बंद हो जाता है। उसके बाद रेगुलर इंटरवल पे उनका फॉलोअप होता है जो चलता रहेगा। फाइनल रिजल्ट वो बताता है कि रियली सेफ्टी है कि नहीं। उन बच्चों का हम मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे एडल्ट में करते रहें वैसे ही बच्चों में भी मॉनिटर करेंगे। इम्यूनोजेनिसिटी भी देखेंगे कि सेफ्टी ही नहीं, अगर सेफ भी है तो क्या बच्चों में देने से फ़ायदा है कि नहीं, क्या एंटीबॉडीज़ लेवल बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर रिजल्ट आता है रिसर्च के बाद कि हाँ सेफ भी है और अगर इफेक्टिव भी है तो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी उस पर जो भी निर्णय लेना होगा वो लेंगे। And coming up on